নমস্কার, আজ তক বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনাদের সঙ্গে আমি রেশমি। আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এমন কিছু সুন্দর মানুষ যাদেরকে দেখার পর আমার মনে হয় আর কোনো ইন্ট্রোডাকশনের দরকার হবে না, সরাসরি তাদেরকে আগে স্বাগত জানাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দ্য ওয়ান এন্ড ওনলি राम गोपाल वर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। वी हैव द ब्यूटीफुल नैना एंड अप्सरा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बोथ ऑफ यू। सर, ये आपको तो अभी तो शायद ये पता ही होगा कि डेंजरस का बांग्ला क्या है। डेंजरस का बांग्ला नो आपको नैना नहीं बताया? नो नो इट्स বিপজ্জনক। विपज्जनक ओह स्वीट है ना? हाँ, सुन के डेंजरस सा कुछ नहीं लगता। साउंड या करेक्ट या Well, sir, I guess काफी दिन बाद आए हैं इस बार कोलकाता। शायद कैसा लगा? चेंजेस दिखे कुछ? मेन पॉइंट है I came in the midnight and we're staying in the same hotel and the press meet happening so I didn't see anything. मेरे ख्याल से हम लोग के अलावा और किसी को आप देखे नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से हम लोग को देख के अच्छा ही लगा होगा। अभी मेरे अप्सरा के साथ बात हो रही थी, उसने कहा कि सबसे कूल प्रेस मीट कोलकाता वाला ही है। Yes and I think this is the most well dressed media I saw for some reason. No yeah everybody is so fashionable. Yes, fashionable and well-dressed media. I think it's interesting for us also. चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो आप हमेशा से मेरे ख्याल से कहीं पे भी रहते हो, जितना आप कम भी आते हो कोलकाता में, लेकिन कोलकाता में क्या चल रहा है, कौन सी फिल्में बन रही है, मेरे ख्याल से इसका तो आपको अंदाजा हमेशा होता होगा। Yeah. I mean, to be very honest, I used to, because see, in the OTT time, the choice has become so much of so many languages, including foreign languages, and I don't speak Bengali. So because of that, I think my knowledge of Bengali films is very limited. Yeah. So maybe somebody like नैना जब है आपकी टीम में, तो वो थोड़ा सा आपको हेल्प तो करेगी ना? See, Naina is also an actress. The point is, लेकिन मैं नैना का मैं चरित्र ही I saw a fantastically made thing, you know. That's where I kind of noticed her also. So otherwise, in the last maybe few years, I have to say that I didn't really follow. Naina, আমার মনে হয় you have done many other projects and you have handled subjects that are, like the subject was quite bold, whether it was চরিত্রহীন, even if I may mention. তো এটা যখন তুমি করছিলে, তো কোথাও গিয়ে সেই এক্সপেরিয়েন্সগুলো তোমাকে হেল্প করেছিল? প্রচণ্ড, বিকজ যেহেতু মিস্টার রাম গোপাল বর্মা মানে এত বড় একটা নাম, তিনি আমাকে লঞ্চ করেছেন, তো অডিশন নিয়ে, তো সেখানে একটা দায়িত্ব থাকে যে এত বড় ডাইরেক্টর যখন লঞ্চ করে যে কোনো সাবজেক্টে, মানে বিউটি সবসময় থাকে না, এক দুবার ইউজ হতে পারে, বাট পারফরমেন্স অলওয়েজ হেল্প করে এগোনোর জন্য। क्या जैसे कि नैना के बारे में अगर क्योंकि आपने चरित्रहन देखा है, तो वाज दैट वन रीजन व्हेन यू वर थिंकिंग अबाउट डेंजरस, आप जब स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे? See, that is separate. I mean, Naina registered her as an actress in Charitrahin. Right. Dangerous ka, see, by the time I actually had this idea when Supreme Court repealed her section, and I know I was going to find it very difficult कोई एक्ट्रेस को कन्विंस करने के लिए, बिकॉज इट्स सच ए टैबू थिंग एंड नो वन हैज एवर डन, और कुछ भी अगर कोई कुछ, व्हाई इज इट स्टिल अ टैबू सर? आई थिंक एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्स पीपल हैव ए प्रॉब्लम टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज ग्रुप में, सो व्हेन द डिबेट डजंट हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली, इट टेक्स टू लॉन्ग ए टाइम टू गेट एनीवेयर, यू नो. सो दैट इज वन थिंग आई वांट टू ब्रेक विद डेंजरस. So when in the front, if you see a poster or a trailer where these two girls, they look so much in love and with so much of dignity and intensity, that is going to bring out people to talk about it. सर, आपको अभी भी ये लगता है कि फिल्में इस तरह से बननी चाहिए, इस तरह की टॉपिक, इस तरह की सब्जेक्ट्स लेनी चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाए? क्या इस वक्त जो भी फिल्में बन रही है, आपको लगता है कि वो ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि आपने कहा कि it was there in your mind why you did Dangerous, you have just explained us before that, but क्या आपको लगता है अभी उस तरह की फिल्में बनना और चाहिए, कम हो रही है? No, of course, 100%, but that is the whole point of films. So जो सब्जेक्ट का जो वेरिएशन है, जो टॉपिक है, जो कोई एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, आई थिंक डेफिनेटली. सो एनी टाइम ए फिल्म कम्स, बिकॉज इट कम्स इनटू डिस्कशन, देयर विल बी सम माइंड स्टार्टिंग टिकिंग अबाउट दैट.
Shayad after when someone sees Dangerous with these two girls, someone might make a film with two boys this time. Absolutely. Yeah. अभी क्योंकि डिजिटली वी आर सो एक्टिव और ओटीटी के ज़माने में क्या आपको लगता है कि जो कंटेंट्स शायद बड़े पर्दे के लिए नहीं हुआ करता था अभी वो एटलीस्ट बन रही है देयर आर मेनी कंटेंट्स जो कि शायद आई डोंट नो वेदर कभी भी हो सकता है कि बड़े पर्दे पे आए लेकिन एटलीस्ट ओटीटीज में हो रही है डू यू रियली चेक ऑन देम Yeah, of course, I do that. Yeah, I watch OTT a lot. The point is, I think we technologically, when we have more devices available and more avenues available and more mediums available, obviously, depending on people's work schedules and their own sensibility. For example, I more than going to the theater, I want to watch at home because theater I hate getting disturbed by the audience. अच्छा Yeah. ओके लेकिन अब तो सर क्योंकि कोरोना की वजह से इतना कुछ बहुत ही प्रॉब्लम हुआ सब इंडस्ट्री को हुआ है तो आपको लगता है कि अभी धीरे धीरे वो फिर से आना शुरू किए हैं लोग For sure, because I think recent releases like Kashmir Files, now Triple R, before that Pushpa, all of them proved that the theatre audience are completely back like before. जो दो आप नाम लिए हैं ट्रिपल आर और पुष्पा दोनों ही if we do not tag them as regional films we can say them language film if you tell us तो वो बॉलीवुड फिल्म्स तो है नहीं सर First of all, I think this is a very outdated thing of Bollywood, Collywood, and Tollywood because eventually films are films. And after the OTTs came, everything is available in all languages according to the convenience of the viewer. Same thing is touching to theatres. Yeah. What is the reason, sir? What do you feel, being a film student, apart from a director and a producer, कि ये ट्रिपल आर या फिर पुष्पा जैसे फिल्में जिस तरह की इनको वेलकमिंग मिली है ऑडियंस में what is the reason? What do you feel? See, my theory on that is, see, the 70s and 80s, actually, all South cinema used to copy Bollywood. और अभी रिवर्स हो रहा Yeah, because Amitabh Bachchan's Diwar and Zanjeer, Rajnikant's career is made on those remakes. N.T. Ramarao's career is made on those remakes. All the top South heroes. And directors used to emulate Manmohan Desai and Prakash Mehra. Then in the 90s, suddenly some music companies came. Music became a very big thing. And music companies started producing films and they wanted to use the films as vehicles to sell music. So that is when this Hum Aapke Kaun, Maine Pyar Kiya, all these films came. Musical films, and that was about selling the music. Right. But South didn't stop it. South kept on continuing the same formula, what they picked up from the 70s and 80s. Okay. And Bollywood almost stopped making the so-called masala films, action, heroism and larger than life characters. That almost Bombay stopped making those films. Then the directors who came in also were educated abroad and exposed more to foreign cinema, and they mostly live between Juhu and South Bombay, and they have no clue about the rest of the country, you know. Right. And then, but there's warning signs were there, but they didn't really look at it because. So if you see the Telugu and Tamil films dubbing rights going for 20 crores, 25 crores, which means that kind of an audience actually exists in the north, which Bollywood was not aware of. And they used to make passing remarks about why they're buying it for such huge prices. And conveniently they thought there might be some one separate sect of people who probably don't come to theatres. And then, Correct me if I'm wrong. Is it like they actually didn't get the connect with the general, the aam aadmi? that's what I'm saying. That's exactly what I'm saying. And I'm also telling the reason why. Because when you're living in Bombay, it is a kind of a multicultural thing, and that in just in the multiplexes you all talk in English and high funda thing. So you completely got cut off from this so-called base masses. So I think the commercial directors of the South, they're very, very rooted to the pulse of the audience because they actually think like them. Their sensibility, they will never talk intellectually. They will never talk. Their basic belief systems are very simple. आपका भी तो वैसा ही है सर No. See, I think I am somewhere in between. I'm neither.
I understand this, but I don't believe. I won't say don't believe in that kind of film. That is not my sensibility to make that kind of film. I believe in realistic films. Right. I believe in genre films. Yeah. सर ऐसे भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स या फिर आप सोच लीजिए अंडरवर्ल्ड को आपसे ज्यादा कोई बेहतर समझता नहीं है, ऐसा कहा जाता है, आपको भी लगता है? Yeah. I mean, I definitely think I never met anyone who understands it better than me. I can say it like that. Yeah. Okay. और ये जो आम आदमी की बात हो रही थी, ये जो कनेक्ट की बात हो रही थी, इसमें ये दो जो हमारी फनकार है दोनों, जिसको आप इस फिल्म में लेके आ रहे, हाउ डू यू फील दे विल कनेक्ट? I think, see, I do not believe you can do anything. No one can do anything where everybody will like. You know, I would definitely think some people might like it, but they don't want to say it out, or just to be politically correct, they will say negative things about it. Some people will really think negative, but the intention of this film is not to make everybody like it. To say whatever we feel strongly, to say it and let it go to see wherever it hits or not. Yeah. Want to know from Apsara and Naina कि पहले दिन का वो शूट कैसा था, क्या हुआ था, सर ने क्या किया था उस वक्त, डांटा था, नहीं डांटे थे कभी? मेरे ख्याल से सर ही इज वेरी कूल ना? बहुत खड़ूस है। रियली? यस ये तो पहली बार हमको सुनने को आया कि आज भी सर खरूस है। अच्छा, सर एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत खड़ूस है, और अच्छा। सेट पे हम सर से डरते हैं, मतलब बाकी अच्छा। टाइम ही इज cool. बाकी time he's cool. एक्चुअली वेरी कूल, ही इज लाइक यू नो दिस जेन जी पीपल, ही विल थिंक Okay. लाइक अस, Okay. बट ऑन सेट ही इज लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर, लाइक द खड़ूस स्ट्रिक्ट टीचर। नैना? यस সেম মিষ্টি খাইয়ে তো কখনো সে চেষ্টা করতে পারতে তুমি কি ইম্পসিবল, মানে সুইট? অল টাইম सर हेट्स फूड, देयर इज नो ये वे यू क्या है कैन सर? फीड हिम। अब यहाँ पे आए खाना वाना नहीं खाए, अब डाइट पे है? No, I mean, I'm not a foodie. यू नॉट अ फूडी? Yeah. फिर तो आपको और ज्यादा कोलकाता में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे फूडी ही है हम लोग। I know, Naina. सर फिर से कब मनोज वाजपेयी के साथ हम आरजीवी सर को देखने वाले हैं, Yeah, soon. है ना? Yes. और आपने जो उनके लिए ट्वीट किए थे फैमिली मैन टू, वो ट्वीट पता नहीं कितने बार रीट्वीट हुए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई फाइनली आ गया मेरा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट, आप तो देखे होंगे। Yes. तो हम लोग कब कर एक्सपेक्टेड उसका? Maybe at the end of the year. Maybe end of the year? Okay, and that will be something like सत्या का कुछ और Sure. I mean, I'm not decided, but definitely something will be there. कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती है सर फिल्मों को लेकर, जहाँ पर रिलीजन आ जाता है, ये वो होता है। What is your take on it? I mean, I see everybody will have a take on everything happening, but if you see it in the context of something like Kashmir Files, I believe its success has nothing to do with religious overtones. I think something about it people connected, वरना उतना बड़ा numbers आने का chance नहीं। आपको लगता है जब भी कोई फिल्म हिट हो रही है उसका मेन रीजन होता है कि कितना वो कनेक्ट करी है? Correct. So something in it connected to everyone, which is the reason. See, if that film did some 20 crores or something, then the possibility of something like that is there, but not at this size. Yeah. और डेंजरस को लेके द लास्ट क्वेश्चन, द डेंजरस को लेके क्या आपका एक्सपेक्टेशंस है? See, my expectation, like I said, I'm not expecting everyone to see. This is a film where I think the unique of one of its kind, where you've seen hundreds and thousands of films. There's a man, woman, and some story, and this is a crime story where the lead pair just happen to be lesbians. So I think that is the best way to normalize the relationship. Right. Yeah. Absolutely. Apsara, your expectation? It's my debut film, so I probably don't want to expect, but I'm sure anybody who will watch it will definitely be thrilled by the visually. It's so different from the films that we watch, or the Right. films that I have Right. watched. So yes, the audience will definitely love it. नैना? অফকোর্স এখন অডিয়েন্স প্রচণ্ড ইন্টেলিজেন্ট হয়ে গেছে, স্পেশালি ওয়েব সিরিজ আসার পর। তো আমার মনে হয় যে আগের মতো অডিয়েন্স সেই লাভ স্টোরি দেখতে চাইবে না, আলাদা আলাদা সাবজেক্ট দেখতে চাইবে, নিশ্চয়ই। এবং আলাদা আলাদা সাবজেক্টের ওপর যারা আর্টিস্ট কাজ করছে, ফিমেলস, দুজন বিউটিফুল ফিমেলস, যেটা আরজিবি স্যার বলছে, মহিলা এত সুন্দরভাবে রোম্যান্স করছে, and that too Exactly. there is a crime thriller story going on. It is one of a Exactly. kind, what RGV sir said. Thank you so much. Thank Thank you you. so Thank very you. much for Thank joining you. us. Thank you. আজ তাক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।